We will describe each of these principles further in the section that follow. The terms that code the system design the system. This first principle is driven by the Agile Manifesto itself, which states that the best architectures, requirement, and design emerge from self-organizing teams, and another of the primary philosophies of agile development. Teams themselves are empowered to define, develop, and deliver software, and they are held accountable for the results. From a management perspective, in order to in order for teams to be held accountable, we must allow them to make the decision required to support that accountability. If not, they will be held accountable for decisions made by others, and that is an ineffective and demotivating model for team performance. While this seems axiomatic, responsibility in earlier practices was different, as table 1 below shown. तो ये जो आपका है फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो टीम है जो कोड करती है वो डिज़ाइन करती है सिस्टम को। तो ये किसको डिस्क्राइब करता है? ये आर्किटेक्चर्स को मतलब उसके रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन जो है, मतलब कि कहाँ जो एजाइल जो आर्किटेक्चर है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिज़ाइंस हैं, वो कहाँ से आती हैं? इट इमर्जेस फ्रॉम द सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स। ठीक है। तो जो एजाइल डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट में जो कौन पार्टिसिपेट करता है, जो सिस्टम को कोड करता है। ठीक है, जो कोडिंग करता है वो पार्टिसिपेट करता है डिजाइनिंग में भी। ठीक है, वही सिस्टम को डिजाइन करता है, वही डिजाइनिंग के लिए वही इम्पोर्टेंट होता है जो कोडिंग करता है। प्री एजाइल एंड पोस्ट एजाइल मैनेजमेंट में, प्री एजाइल में डिटरमाइन द मार्केट नीड्स एंड फीचर्स, communicates vision. Product managers determine requirements. Architects determine architecture. Management determines schedule and commits on behalf of team, accountable for the results. ये pre-agile management है। Post-agile management determines market needs and features, communicates vision, eliminates impediments for the team, accountable for empowering teams to deliver. Pre-agile team में it inherits the plan, inherits the architecture, left holding the bag and executes on a best efforts basis. Post-agile में determines the requirements, determines the architecture, determines the schedule in terms of iteration and releases, commits on behalf of themselves, accountable for the result. This level of responsibility was further compounded by time sequenced waterfall activities. Typically, there was a single upfront planning phase intended to accommodate the inherent risk of the project, perform all the necessary design, and predict sequence task dependencies running out as far as year. Because it happened upfront, the planning phase was decoupled from the lessons learned later during implementation. Once the lessons were learned, it was too late to do anything to impact the schedule except to apologize for the fact that the schedule was not met. From a technical perspective, architectural decisions are mostly optimally made by the coders, the technical leads, and team based architects, because they are closest to the implementation and often have the best data available to make such a decision. तो जो आर्किटेक्चर डिसीजन में कौन ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है? जो कोडर्स होते हैं, क्योंकि
जो टेक्निकल लीड्स होते हैं उस डेवलपमेंट टीम के, वो आर्किटेक्चर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो सब जो उसको जो आपके यूजर स्टोरीज हैं, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का सारा क्रेडिट किसको जाता है? कोडर्स को जाता है, टेक्निकल बंदों को जाता है, ठीक है। तो मेन इम्पोर्टेंस उन्हीं की होती है, क्योंकि वो ज्यादा उसके इम्प्लीमेंटेशन फेज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो आपके कोडर्स होते हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, वही रोल प्ले करते हैं, मेन रोल वही प्ले करते हैं। Moving these responsibilities to the team is a triple win for the enterprise. A more optimum decision is likely to be made. Once a decision is made, the team will likely work much harder to make its decisions work in the implementation. Regardless of what happens, the team is empowered, responsible, and accountable for its decision.